Okay. Good morning, everyone. In the previous class, we had discussed investment decision, and within that, we discussed factors affecting fixed capital requirement and capital budgeting. Right? Now, today we will discuss factors affecting working capital requirements. What is working capital? Aditya? Sir, working capital means the people who are working. Working capital means the amount of capital invested in current assets. Okay, so there are two concepts of working capital we discussed yesterday in the previous class. One is gross working capital, which is equal to current assets. The other is net working capital, which is equal to current assets minus current liabilities. So the factors affecting working capital, whether a company or a firm will require more working capital or less working capital. It will depend on which all factors that we are going to discuss now. First is nature of business. A manufacturing business requires more working capital because the operating cycles are long. Now, what do we mean by operating cycle? The time when you purchase raw materials to the time you realize sales. Let's take an example. You are producing toys, let us say. So the first you buy the raw materials, your cash goes out. Then you convert those raw materials into finished goods. It takes some time. Then you sell those finished goods. Some sales are on cash basis, some are on credit basis. Then it takes some time to collect the amount from the debtors. So the time when cash goes out in purchase of raw materials till the time you receive cash from your debtors to whom you have sold the goods, this time period is called operating cycle. Is it clear? Aditya, is it clear? Yes, sir. ओके यस बोल दिया करो हर पॉइंट के बाद जब भी मैं पूछता हूँ. So in manufacturing, generally long operating cycles are there because manufacturing process takes some time. So till that time, the cash has already gone out for the purchase of raw materials and goods have not been sold. जब तक बिकेंगे नहीं तब तक cash आएगा नहीं. So for a long period of time, the firm or the company has to manage its expenses out of working capital. So it requires more working capital. Whereas service providers and public utility providers like electricity supply company, telephone company, they require working capital which is less. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ट्रेडिंग में कम लगेगी वर्किंग कैपिटल. क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ गुड्स को खरीदना और बेचना है, बीच में कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है, तो ऑपरेटिंग साइकिल शॉर्ट है. लेकिन पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज में तो और भी ज्यादा कम लगेगी वर्किंग कैपिटल क्योंकि उनका रेगुलरली कैश इनफ्लो आता रहता है. ठीक है? इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट इज स्केल ऑफ ऑपरेशंस. द ग्रेटर द साइज ऑफ बिजनेस, जितने बड़े स्केल पे बिजनेस होगा उतनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होगी उसके एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस को. एंड lesser the scale of business, scale of operations, lower the working capital requirement. Then third is seasonal factors. Business में हमने डिस्कस किया था, there are various sometimes the business activity is very high, we say it is a busy season. ठीक है? Then more working capital is required. जब भी सपोज आपका प्रोडक्ट है सीजनल, यू आर मेकिंग फैंस, तो फैंस की डिमांड समर्स में है ज्यादा,
विंटर्स में कम है। तो समर सीजन में आपकी एक्टिविटी ज्यादा रहेगी बिजनेस की, you will require more working capital. On the other hand, if you are making fans, your business activity will be less during the winters, so you will require less working capital during the winters. Clear? Yes, sir. Next is production cycle or operating cycle. As we just discussed, the cycle from purchase of raw materials to their conversion into semi-finished goods, to their conversion into finished goods, to sales, to realization of cash from sales. All this entire period is called operating cycle. So longer the operating cycle, more is the working capital requirement. And shorter the operating cycle, lesser is the working capital required. Clear? Sir. Next point is credit allowed. If we allow credit to our customers, means if we sell some of our goods on credit basis, that means we will get the cash even later. So for that time also we need more working capital. So working capital requirement will be more. The more we allow credit, more will be the working capital requirement. The lesser we allow credit, lesser will be the requirement of working capital. And opposite of this is credit availed. When we buy goods from our suppliers, if we are making all cash payments immediately, that means we require more working capital. But if we are buying on credit, that means we can also pay on later. So we require lesser working capital. So more the credit availed, lesser the working capital requirement. Lesser the credit availed, more the working capital requirement. Clear? Yes, sir. Next is business cycle fluctuations. We had discussed earlier that there are various business cycles. There is a boom period when business activity is very high. Then there is a recession period when business activity is slowing down. Then comes a depression period when the business activity is very low. And then comes recovery period when again business activity starts picking up. So these 4 cycles go on in an economy. During the boom period, when production and selling activities are at a very high level, so more working capital will be required. But during a depression, when business activity is very low, working capital requirement will also be very low. Clear? Yes, sir. Next is level of competition. If you have no competition at all, you have a monopoly, you are the only producer or supplier of a particular product, then you do not need to incur any advertisement expense. You do not need to incur any sales promotion expenses because there is no competition. So customers do not have any other option. So your working capital requirement will be less. If you have 1 or 2 competitors, then you have to spend some money on advertising, on marketing of your products. So some amount of working capital, some more amount of working capital will be required. But if you have many competitors, then you have to incur much higher expenses on marketing, on advertising of your products. So even a higher amount of working capital will be required. So more the level of competition, more the working capital requirement. Lesser the level of competition, lower the working capital requirement. Clear?
Yes, sir. Next is availability of raw material. जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, अगर उसका रॉ मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, जब भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए आप सप्लायर को फोन करो, सेम डे या नेक्स्ट डे आपके पास रॉ मटेरियल पहुंच जाता है, तो आपको ज्यादा रॉ मटेरियल स्टॉक करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब आपको चाहिए तब आप फोन कर दोगे, एक जब खत्म होने वाला होगा एक दिन पहले आप फोन कर दोगे, आपके पास रॉ मटेरियल पहुंच जाएगा, तो आपकी स्टोरेज कॉस्ट कम रहेगी एंड subsequently working capital requirement कम रहेगी. But on the other hand, if the raw material is not readily available, आपका जो रॉ मटेरियल है, कई बार आप फोन करते हो सप्लायर को तो कई दिन लग जाते हैं आने में, कई बार जल्दी आ जाता है, कई बार डिले हो जाता है. That means the availability is not assured, it is not very regular, it is not very quick. Then you will have to keep some stock of raw material with you, so that by the time you place order, even if it takes a few days to arrive, till then you can use that raw material which is in stock. So your storage cost will increase and subsequently working capital requirement will increase. Clear? Yes, sir. Next is growth prospects. A firm which is growing rapidly, which is growing very fast, will obviously need more working capital to meet its growth requirements. On the other hand, a firm or company which is stagnant, which is not growing much or growing at a very slow pace, will require less working capital. Clear? Yes, sir. Next is inflation. If inflation का क्या मतलब होता है? मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, प्राइसेस बहुत हाई हो गए हैं. Yes, prices जब बढ़ रहे होते हैं लगातार, उसे कहते हैं इन्फ्लेशन. If the prices are continuously rising, तो मतलब हमारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ रही होगी और जो कंज्यूमेबल्स हम यूज करते हैं उसकी कॉस्ट भी बढ़ रही होगी, तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए हमें. On the other hand, if there is very less inflation or no inflation, prices are not increasing, then we can manage with a lower working capital. Then next point is operating efficiency. Efficiency means minimum wastage. Okay. Maximum utilization. Yes, maximum utilization of resources. Very good. So efficient operations, when efficient operations are there, that means wastage will be less. Wastage will be less means cost will be less. When wastage and cost are less, working capital requirement will also be less. On the other hand, if the working of the business is inefficient, means there is a lot of wastage, then there will be a lot of cost also. The cost will also rise and the working capital requirement will also rise. Clear? Yes, sir. Good. Now this completes our investment decision. We have discussed financing decision and investment decision so far. The third financial decision is dividend decision. In this dividend decision, we have to decide कि कंपनी का जितना भी प्रॉफिट हुआ है, out of that profit, what proportion or how much amount should be retained or reinvested in the business, and what proportion or how much amount should be given to the shareholders as dividend. अगर सारा अमाउंट कंपनी रीइन्वेस्ट कर देती है बिजनेस में तो शेयर होल्डर्स को कुछ रिटर्न नहीं मिलेगी, दे विल बी अपसेट.
अगर सारा अमाउंट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है प्रॉफिट का कंपनी, तो बिजनेस की ग्रोथ के लिए फंड्स की कमी रहेगी. So the company has to maintain a balance between the two. What proportion of profit it should give to the shareholders and what proportion should it reinvest? This decision is called dividend decision. A suitable dividend decision should be taken which ensures sufficient retention of profits for growth and expansion, and also distribution of sufficient dividend to keep the shareholders satisfied. Now, on what factors can we take this decision, dividend decision? First factor is current earnings. जितना आपका प्रॉफिट ज्यादा है उतना ज्यादा आप डिविडेंड दे सकते हो, और अगर प्रॉफिट कम है, अर्निंग्स कम है, तो कम डिविडेंड दिया जाएगा. क्लियर? Yes, sir. Then next is stability of earnings. Suppose आपकी अर्निंग इस साल तो अच्छी हुई है, प्रॉफिट अच्छा हुआ है, लेकिन पिछले 3-4 साल से लगातार आपका प्रॉफिट बहुत कम हो रहा था और आप कम डिविडेंड दे पा रहे थे. ठीक है? और फ्यूचर में भी आपको नहीं पता अर्निंग कैसी होगी, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है. इन सच अ सिचुएशन, even if you have good profitability this year, you may declare less proportion of it as dividend because you are not sure whether you will be able to maintain it or not. Similarly, अगर पिछले सालों में अच्छा प्रॉफिट हुआ है और आपके पास एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं अच्छे, इस साल किसी वजह से प्रॉफिट कम भी हो गया, तो उन रिजर्व्स में से पैसा निकाल के यू कैन गिव अ हाई डिविडेंड. सो if your earnings are stable, a company with a stable earnings can give a higher dividend because it knows कि उतना वो अर्निंग उसकी मेंटेन रहेगी. लेकिन अगर किसी कंपनी की अर्निंग स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, कभी ज्यादा अर्निंग हो जाती है, कभी कम हो जाती है, तो ऐसी कंपनीज जनरली लेस डिविडेंड पे करती हैं बिकॉज दे आर नॉट श्योर वेदर दे विल बी एबल टू मेंटेन इट और नॉट. क्लियर? Yes, sir. Next point is stability of dividends. Previous one was stability of earnings, means profit. Now we are talking of stability of dividend. अगर किसी ईयर में अर्निंग लो हो गई है लेकिन कंपनी पास्ट में अच्छा प्रॉफिट अर्न करती रही है, अच्छे डिविडेंड्स देती रही है, तो रिजर्व्स में से, एज आई वाज सेइंग, थोड़ा सा मिक्सअप हो गया था उसमें, इसका अर्निंग्स वाले में ये यहाँ पे आएगा. तो अगर पास्ट में कंपनी अच्छे डिविडेंड देती रही है, तो आउट ऑफ रिजर्व्स कुछ अमाउंट निकाल के इस साल भी कंपनी थोड़ा सा प्रॉफिट के कंपैरिजन में ज्यादा डिविडेंड दे सकती है, एंड वाइस वर्सा. सो टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स, a company may declare a slightly high dividend even in the year of low profitability, and a company may declare a lower dividend even in year of high profitability. Clear? Yes, sir. Next is growth opportunities. अगर कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, कंपनी ग्रो कर रही है, एक्सपेंड कर रही है अपना बिजनेस, then it requires additional capital for that growth, and retained earnings or undistributed profits are the most economical and most convenient source of finance. क्योंकि अपने ही प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया, तो उस पे ना तो कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन है कि किसी को देना है, और ना उसके लिए उसमें और कोई कॉस्ट इंकर करनी है पैसा रेज करने के लिए, इशू ऑफ शेयर्स के थ्रू या इशू ऑफ डिवेंचर्स के थ्रू या लोन लेके. सो मोस्ट कन्वीनियंट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग इज retained earnings. So such company which is growing fast, it will retain more earnings and give lesser dividend. And if growth opportunities are less, then the company may give a higher proportion of profits as dividend. Clear? Yes, sir. Then preference of shareholders.
शेयर होल्डर्स जनरली प्रेफर करते हैं कि उन्हें रेगुलर डिविडेंड मिलता रहे. तो to keep the shareholders satisfied, the company should try to declare some amount of dividends even when the profitability is low. Clear? Yes, sir. Then taxation policy. If tax on dividends is high, shareholders may prefer lower dividends because after tax their return will decline. If the company is retaining more earnings, that will increase their market value of their shares, so they will gain in that way. But if the tax on dividends is less, then the shareholders will prefer to get more dividends. Clear? Yes, sir. Next point is legal constraints. The Companies Act imposes several restrictions which have to be complied with before giving any dividend. For example, depreciation on assets is to be charged before giving dividends. Some statutory reserves like debenture redemption reserve, which you will study in accountancy in a short while, that is to be created. So after satisfying these legal provisions, whatever amount is left, dividend can be paid only out of that. Clear? Yes, sir. Stock market reaction. If the shares of the company are selling at low price in stock market, then to increase the price of its shares, the company may declare higher dividend to keep the shareholders satisfied and to attract more investors to invest in the company. Clear? Yes, sir. Next point is access to capital market. If it is a well-reputed company, the company has a very high value of goodwill, then whenever the company issues shares, public readily invests in them. So such a company does not need much dependence on retained earnings. But new companies or less reputed companies which do not have a very good reputation in the market, many people do not know about these companies, when they issue shares or debentures, very few people invest in their shares or debentures. So such companies depend more on retained earnings to finance their expansion needs. So they will keep, such new or less reputed companies will keep a higher amount of retained earnings and pay lesser dividend. Clear? Yes, sir. Next point is cash flow position. जरूरी नहीं है कंपनी का प्रॉफिट हाई हो तो उसके पास फंड्स भी ज्यादा होंगे. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. हो सकता है ज्यादातर सेल्स क्रेडिट पे हो, उधार पे हो, तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा है लेकिन फंड्स कम है कंपनी के पास. तो हो सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, फंड्स भी ज्यादा हैं. हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी लो है, फंड्स भी लो हैं. बट ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी हाई है लेकिन फंड्स लो हैं, या प्रॉफिटेबिलिटी लो है लेकिन फंड्स ज्यादा हैं. तो ऐसे केस में कई बार प्रॉफिट ज्यादा होने पे भी कंपनी कम डिविडेंड दे पाती है बिकॉज उसके पास कैश फॉर्म में या बैंक बैलेंस की फॉर्म में फंड्स की शॉर्टेज है. ऑन दी अदर हैंड ऐसा भी कई बार होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी लो है लेकिन कंपनी के पास फंड्स सरप्लस अवेलेबल हैं कैश और बैंक में, तो कंपैरेटिवली थोड़ा हाई डिविडेंड भी कंपनी पे कर सकती है. क्लियर? Yes, sir. लास्ट पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स. कई बार जब कंपनी लोन लेती है बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कंपनी पे.
कि आपको डिविडेंड देने से पहले कम से हमसे कंसल्ट करना होगा, यू कैन नॉट गिव डिविडेंड मोर देन दिस परसेंटेज। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स रहें उनका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करने के लिए। तो अगर ऐसी कोई एग्रीमेंट के बेस पे, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, तो कंपनी को उन्हें भी ध्यान में रखना पड़ेगा बिफोर डिसाइडिंग हाउ मच डिविडेंड टू गिव। क्लियर? Yes, sir. नाउ यस दृष्टि। सर इसमें लो अर्निंग पे जब उसकी हाँ। प्रॉफिटेबिलिटी दृष्टि माइक की वॉल्यूम, कैश फ्लो माइक की वॉल्यूम फुल कर लो या माइक के पास आ जाओ। सर आपने जो कैश फ्लो वाले में कैश फ्लो पोजीशन वाला है उसमें लिक्विडिटी हाई है और प्रॉफिटेबिलिटी लो है, तो फिर हाई डिविडेंड कैसे दे सकते हैं वो? क्योंकि लिक्विडिटी हाई है, प्रॉफिटेबिलिटी लो होने पर भी अगर कंपनी के पास फंड ज्यादा रखे हुए हैं, ठीक है, मे बी पिछले एक्यूमुलेटेड रिजर्व की वजह से पिछले सालों के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स उसके पास रखे हुए हैं, इसलिए फंड्स आई हैं। इस साल प्रॉफिट कम है लेकिन पिछले सालों के प्रॉफिट थे एक्यूमुलेटेड हाई, इसकी वजह से फंड्स आई हैं, ज्यादा है उनके पास। तो प्रॉफिट कम होते हुए भी क्योंकि पिछले सालों में कंपनी ज्यादा डिविडेंड देती आई है, तो इट कैन पे अ हायर डिविडेंड। यस सर। क्लियर? यस सर। And vice versa. So this completes our chapter of financial management. अब बुक से आप इसके क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना असाइनमेंट में। Any doubt? We will stop over here today. Anyone having any doubts? No? No, sir. Okay, thank you.